I'm sure you have questions for the wonderful people on stage. You know the drill. It's very simple. You just have to raise your hand. Do point a question to who you want to ask the question to. So for example, अगर आप अपर्णा से शुरू करना चाहते हैं, and I think Aparna, that's what we're going to do. We're going to ask you the first question. Who is it in the audience? कौन है? Yes, hello. बहुत ज़्यादा बोल दिया दीदी ने अंग्रेजी में, तो कोई बात नहीं. अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते तो पूछिए. Anybody? Thanks, Nia. Thank you so much. First question, Rishi K. Rishi K, please. Thank you, Rishi. This one's for Aparna. I like that, you know, you're doing these formats. There's one mic stand, there's Comicstaan. And obviously if they're successful, they get repeat seasons. And I also like the fact that famous comedians get to do their stand-up specials. But my question to you is, will we see new formats continuing in the comedy genre in the future? Like radical new formats, and not just future seasons of existing franchises and specials. So if you could just underline your plans in terms of new IPs or new formats in the comedy genre. And big ups to you, Aparna, for supporting comedy. I mean, comedy is serious business. I mean, I remember Saban telling me this once when he came into studio, saying that there's not enough comedy that is supported on mainstream media, whether it's radio or television and stuff. And it's great to see OTT coming in and providing so much support. And the big thing in this is for small town India, for satellite townships, and you know, any kid can just come out there and take inspiration from them and go where they go. So big ups to you, and you can answer my question. Thank you. Thank you. Yeah, that's a great question. What's happened in the last couple of years is I think we've managed to create a very loyal fan base for comedy. So our commitment to comedy will continue. Before I start answering this question, I want to tell you that One Mic Stand did incredibly well. In fact, now we are taking that format to other territories, and it's now being done in other territories, which is fantastic. We are always open to new ideas. Anybody who has new formats, please come pitch to us. Always looking for newer ideas. We are in fact enhancing the scope of the unscripted. We really want to open up and do more things, docu-series, true crime, investigative, and of course comedy. So always there looking for newer ideas, newer pitches. If there are any, please come pitch them to us. Thank you so much, Aparna. I do want to answer that question on your behalf. Everybody on stage, एक ज़माना था जब आपने कहा कि सपन ने कहा कि लोग कॉमेडी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. असलियत ये है 2022 में कॉमेडी सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है. We've come a long way, baby. Thank you. All right, our next question. Hi, ma'am. Who would you like to ask your question to? माइक आ जाएगा आपके पास. आप पहले बताइए. Mr. Yeah, I have a question with Rahul. Rahul Dravid, that is Abhish Matthew of Comicstaan. No, the one in white shirt. The one in white shirt. Rahul, yeah. Identify yourself, Rahul. So I have a question that you are mentoring roasting to your this thing. So after mentoring roasting, somebody had roasted you yourself also. So that's my question. The police roasted me lots in 2015. No, from the participants. Yeah, of course. I mean, part of being a mentor on the roast is that, I'm obviously also on stage with them. So I am as game for jokes. I'm as much fodder for jokes as anybody else at their roasting. So I was very clear with them from the start only that you have to make as much fun of me as you make of everybody else. Yeah. And don't pull your punches. In fact, it's easiest to make fun of me because I have no say in the judging. So they can say whatever they want to me and there are no consequences to their action. मतलब क्या maximum मैं WhatsApp पे block कर दूंगा. मतलब कुछ consequence ही नहीं है. So they did, and it was a lot of fun actually. We all roasted each other and we had a lot of fun. There was even a moment where at one point give you hidden secrets from behind the show. The judges pulled me aside and they were like, ये क्या बोल रहे हैं बच्चे? कुछ मतलब ज़्यादा तो मतलब नहीं होगा. I'm like, भाई तुम लोग देखो, and then they ended up having a good time, I think, right? Yeah. So yeah, we all got roasted, including me. Thank you, Rahul. We love you. नाम तो सुना होगा.
That's why. Yes, sir. Sir, आपके पास mic आनी चाहिए. Don't worry. Rohit, can I ask please? You know, you have a mic already. Yeah. Then please go ahead. Hi, my question is for Abhish. Hi sir, Akriti here from Absolute India News. Abhish, I wanted to ask you that you have been hosting Comicstaan since its inception. How has it been for you? And does hosting comes naturally to you? Yeah, hosting does come naturally to me. I keep getting asked, do you want to become a judge? And I always feel those who can't do judge, no. What? No. Listen, only you say that. Come on. Those who can't do teach. Yeah, exactly. But variation. I enjoy hosting the show a lot because I think I like interacting with a live audience at all time. If you're sitting and judging, it's a way tougher spot to be. Because you have to keep in mind that these comedians who are coming on the show have been doing some stand-up. They are very good. How do you judge? So technically hosting is easy. Because you're like, hey, you like us, you like them, no? Hate them. But have you been offered to judge? I don't know if, I don't think it's an offer thing. Like these guys are literally a WhatsApp group. And if asked again, I would be hosting again and again and again. So if I do become a judge, that's probably because they found a better host. So, yeah. Hello, my question is to Sapan. Hi. Hi, I'm Divya from India Forums. Hi, Divya. So, as a mentor, how has it been for you? And is there any key points you keep in mind while mentoring your budding comedians? And do you give them something from your own personal career path? It's been great actually. I think all of us can say mentoring has been a great experience also because हमें भी सीखने को मिलता है. कई बार honestly we act like very smart, but sometimes when they ask some smart question like ये तो मुझे भी नहीं पता यार. Then we go home, we do some homework, we come back. So it's a great experience overall. And I think just the growth is very interesting to see. As I think Anu also said that in a week, it's very tough because the Comicstaan, whatever said and done, is a very tough format for contestants. When we all started, we just did open mic, we just did our kind of stand-up. We'll do only observation or something. They have to do 7 different rounds, and every week they have to excel at it. So just seeing the growth is very, very good. And just personal advice, the basic things that you can tell them कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, look at the audience this way, that way. That's all that we can tell them. Yeah. Hi, this is Suhail over here. Congratulations to your entire team. Hasana, it's a very difficult task. My question is to Aparna. We enjoy like comedy, सब लोग हंसना तो लोगों को अच्छा लगता है. People are enjoying the show. But there is one section of people who really feel कि ये जो कॉमेडी है वो कभी हमारे कल्चर को ख़राब भी कर रही है. तो इस तरह के लोग भी हैं, तो उसको आप किस तरह से डील करते हो? मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक लाइन कहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि समटाइम इन केस ऑफ कॉमेडी यू क्रॉस योर लिमिट्स ऑल्सो इन फैक्ट लाइक कोई वर्ड्स में हो या किसी तरह के, तो वो आप किस तरह से उस चीज़ को देखते हो जी? इस शो के ज़रिए हमारा इंटेंट सिर्फ लोगों को हंसाना है. उनकी लाइफ में इतने डिफ़िकल्ट वक्त में थोड़ी सी सनशाइन लाना है. बाकी वी वांट टू बी एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल टू ऑल द पीपल. तो पूरी कोशिश सबकी यहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स की यही है कि रिस्पेक्टफुल रहें, सेंसिटिव रहें और रिस्पॉन्सिबल रहें. थैंक यू. Hey, Vinita here from Adkali. Guys. Okay, so my question is to Gunjan ma'am. Ma'am, OML and Prime are from very good association from a longer time. So my question is, how do both the brands complement each other and in terms of creating and presenting such high impact content? Thank you. I think we've been the lucky beneficiaries. All of us here have had Amazon support from the get-go. They were the first platform to really come in and give comedy that space. And we've had the opportunity to create many, many shows together. So whether it's scripted, unscripted, and we're really looking forward to doing more work as well. Hello. Guys, one more question. Hello, hi. Pooja here from Awesome TV. Hi. उनको कंटिन्यू करना है जरा. Also पूजा जी.
Just give us a minute, yeah? Go for it. Guys, I am a big fan of all of yours. My morning start from you, actually, because I am been a really good comedy fan from a long time. So my question is for Prashasti. How is the journey from being season 1 from there till now? Oh, it's been great. As I said earlier that like if there was no Comicstaan, probably मैं अभी भी नौकरी के साथ में part time stand up कर रहे होते. So and there's absolutely no exaggeration in that. Like I stepped into comedy because I did this reality show, and none of us at that time knew कि इस show का क्या होगा actually. It was the first season. And I mean the platform that it gave me uske baad se like I have to say this touchwood there's been no looking back, like opportunities aati ja rahe hain, and comedy is hard work, but I think the thing is when you get a platform like this, you also get a community like this to to mentor you. Like I think I benefited a lot from this constant mentorship जो Comicstaan के साथ शुरू हुई थी और वो लगातार बनी हुई है over these 4-5 years. So I also feel very responsible कि that I think probably this is my chance to give it back to the people who are coming in now and help them with to propel their careers. Thank you, Prashasti. Siraj sir, have you gotten yourself a mic? Because if you haven't, then I'm going to come there personally and give it to you. Come. Sir, उनका हाथ तब से ऊपर है, आप जरा इनको माइक देंगे, बहुत सीनियर हैं. Sir, it's my honor. सर बैठेंगे सर बैठेंगे. सिराज जी प्लीज हैव अ सीट सर. जाकिर से किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा तो मैं सोचता हूँ कि मैं पूछ लूँ. सिराज जी कैन आई रिक्वेस्ट यू टू हैव अ सीट सर? थैंक यू सो मच. जी सर. ओरिजिनल कॉमेडी करना बहुत ही मुश्किल काम है और ओरिजिनल कॉमेडी को पहचानना उससे भी मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारी कॉमेडी किताबों से जोक से निकल के आती है. तो आपकी नज़र में ओरिजिनल कॉमेडी की क्या अहमियत है, या आप उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, नंबर देते हैं? और इसी सवाल का दूसरा भाग ये है कि दूसरी तरफ मिमिक्री है जो किसी की नकल करते हुए आप किसी को हंसाते हैं. उसके दो पहलू होते हैं, या तो आप किसी की नकल कर रहे हैं, सिर्फ नकल कर रहे हैं, या आप नकल करते हुए उसको जोक बना के हंसा रहे हैं. तो इन दो तरह की कॉमेडीज़ में जजेस का क्या रवैया रहता है, ये आपसे जानना चाहता हूँ. जी बहुत सवाल आपका बहुत अच्छा है सिराज साहब. दो बातें, पहले सेकंड वाला मैं आपका एड्रेस कर दूँ. तो मिमिक्री अपने आप में एक टैलेंट है अलग तरह का. स्टैंड अप कॉमेडी में थोड़ी बहुत मिमिक्री हम लोग करते हैं, पर मिमिक्री अपने आप में एक जॉनर. वो लोग बहुत शार्प माइंड होते हैं, बहुत बेहतर आर्टिस्ट होते हैं जो आवाज़ निकालने के साथ साथ उसमें जोक भी ऐड कर पाएँ. तो मेरे ख्याल से तरजीह जब दी जाएगी तो उसको दी जाएगी जो मिमिक्री की आवाज़ की एक्यूरेसी के साथ साथ उसमें क्या जोक डाल पाए. क्योंकि देखिए आवाज़ किसी की इमिटेट करना वो ठीक है, पर उसमें एक्ट क्या बना आपका, है ना, वो भी तो ज़रूरी बात है ना. कि आवाज़ कॉपी कर ली वो तो एक इनबॉर्न टैलेंट है, या आपने थोड़ा वर्क किया उसके ऊपर, पर आपका स्टेज पे जो एक्ट हो रहा है वो है कि आपने जोक क्या उसके अंदर जोड़े. तो पहली बात तो ये. दूसरी बात, ओरिजिनल कॉमेडी की जहाँ तक मुतालिक मैं बात करता हूँ, मेरा ऐसा समझ है कि दुनिया में साहब कुछ भी नया नहीं है ना. अगर हम में से किसी को भी ये लगता है कि हम में से कोई नया कुछ कह सकते हैं तो बहुत ही छोटी सोच है वो. ठीक है, हज़ारों साल से ये दुनिया है ना और ताक़यामत रहेगी. बहुत सारे बड़े बड़े लोग हमसे अच्छे समझदार ज़हीन लोग रहे जो कह गए बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें. तरीका ये है कि जब कोई प्रेम गीत लिखा जाता है तो प्रेम गीत तो लिखा जा चुका है, पर हर बार हर दौर हर वक्त का जो उस वक्त उस लम्हे का जो एहसास होता है वो अपने आप में नया होता है. हम सब अपने आप में बहुत यूनिक सोल्स है ना, उस मौके उस लम्हे पे पैदा हुए दो माँ बापों से, है ना. तो हमारा जो मानना है, एहसास भले ही वो दुनिया में 100 बार कहा हो, जब आपको जब इश्क महसूस होगा तो वो उतना ही यूनिक है जितना पहले कभी किसी को महसूस हुआ. ऐसी जोक भी होता है सर. बस इतना और बता दूं कि मेरा नाम सिराज सैयद है और मैं filmfestivals.com की तरफ से पत्रकार हूँ. अच्छा सर, परिचय देना ज़रूरी है इसलिए. नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Thank you so much. Thank you. Ask a good question, get a great answer. That's what this is about, ladies and gentlemen. Next, last.
लास्ट क्वेश्चन। ये जाकिर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर तो सेंस ऑफ ह्यूमर है, चाहे आप छोटे शहर से बिलोंग करते हो या बड़े शहर से। मेरा पूछने का मतलब ये है कि आजकल ये जो दौर चल रहा है, छोटे शहर से लड़के आ रहे हैं, आप खुद छोटे शहर से बिलोंग करते हो और इतने सफल हो रहे हैं, क्या इसका कारण ये है कि छोटे शहर में लोगों के पास ज़्यादा वक्त है कैरेक्टर्स को नोटिस करने के लिए? क्योंकि आप, जैसे आपने खुद कहा था, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, आप सोसाइटी से उठाते हो चीज़ें। क्या उन छोटे शहर के लड़कों और लड़कियों के पास वो ज़्यादा वक्त है, ठहराव है कि वो अपने इर्द गिर्द चीज़ों को नोटिस करें और उसके चुटकुले बनाएं और कॉमेडी करें? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। दरअसल क्या होता है कि एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, और एक होता है क्वांटिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कि आपका, तो जब मैं अपने ज़िंदगी को जब पलट के अब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन अभाव में रहा, कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रही वो बहुत, चूँकि रिसोर्सेज नहीं थे। अब जब जिस ओहदे पे पहुँच के जब मैं पलट के अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा खुशकिस्मत और क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह के तबके से मैं आता हूँ, ठीक है, बात ऑब्जर्वेशन की जब हम करते हैं तो क्या है कि फाइनेंशियल स्लैब की एक एक्यूरेसी होती है। ठीक है, मैंने अपने जीवन में इतने तरह के फाइनेंशियल स्लैब जंप करे हैं कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मर्सिडीज में बैठा हुआ आदमी इस वक्त क्या सोच रहा होगा, पर मुझे वो भी मालूम है जो लड़का मेरे घर पे स्विगी का ऑर्डर लेके आता है, ठीक है, कि उसके जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब मैंने जिया है। मेरे ख्याल से बड़े शहर के लड़के भी वैसा सोच सकते हैं। बात यह है कि क्या आपकी नज़र खुली है इस तरह की, है ना। वो बहुत सारा परवरिश से आता है कि आपके ऐसे माँ बाप के पाले हुए बच्चे हैं जो आपको सिखाते हैं कि बेटा सबको देखो, इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो, या फिर आपके माँ बाप आपको बंद अंडे में रखना चाहते हैं। हम माँ बाप के बारे में सब अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, पर बहुत माँ बाप कंट्रोल फ्रीक भी होते हैं, ठीक है ना। ब्लॉक में बच्चों को रखते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाना, वहाँ से वहाँ जाना। वो बहुत मोनिटाइज करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं। मोनिटाइज तो खैर मैं करना चाहता हूँ। Your attention please. Due to an emergency, it is necessary to evacuate the building. जाकिर ने आग लगा दी। ठीक है, चलिए। ओहो! Leave the building as quickly as possible and make your way into the open. The emergency exit signs show the quickest route out of the building. Please follow nothing, the right? instructions of the No, it's okay, it's all cool. 15 जुलाई 15 July, Comicstaan season 3, 15 July. Yeah, it's a bit. Is it a drill or what is it? Oh no. Mock drill, शायद. Wait, hold on. Acha, I just want to know one thing. Do we have enough time for Zakir to finish his answer, or do we have to evacuate? Such bata do. You are putting our hands up. It could be in anything. Yeah? Can continue? That never happened. Edit the last 30 seconds. Zakir, as you. Yes, तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि परवरिश पे बहुत डिपेंड करता है ना, कि आपके माँ बाप ने क्या आपको उस तरह की जहनियत दी है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करें। सारा खेल ऑब्जर्वेशंस का ही और वही है कि आपकी नींव कहाँ से आ रही है। और छोटे शहरों में क्या होता है कि क्योंकि माँ बाप इतना ध्यान नहीं दे रहे होते बच्चों पे, ठीक है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कम ध्यान देना भी जरूरी होता है बच्चे, ठीक है जी। ये मैं आपको इसमें थोड़ा साइंस है, फिजिक्स है इसके अंदर, ठीक है। जितना शार्प होगा उतना पेनिट्रेट करेगा, जितना वो उसका एरिया बड़ा होगा उतना इम्पैक्ट उसका बड़ा होगा, पर उसका पेनिट्रेशन कम होगा। तो जब आपको ऐसी बात कहने की कोशिश करते हैं जो सब तक पहुंचे, तो उसकी जो डेप्थ है वो कम रहेगी, ठीक है। और जब ऐसी बात कहें जो सिर्फ एक तक पहुंचे, तो उसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसीलिए ज़बान का भी खेल है उतना। जब आप किसी एक से बात करते हैं तो सब वो उस तक पहुंचती है ना। जब आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम रहता है, ठीक है। Alright, you know what? मैं स्वयं जाकिर से पूरे दिन बात करना चाहती हूँ। अगर मुझे वक्त दे, लेकिन वक्त नहीं मिलता ना इनके साथ, तो इस वक्त आपको भी अपने वक्त का लिहाज करके हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा। लेकिन वादा कीजिए कि 15 जुलाई को देखेंगे कॉमिक्सtaan सीजन 3 on Amazon Prime Video. Please take a bow, ladies and gentlemen. You guys are so good. बैठे बैठे bow ले लो, bow. Thank you. या खड़े खड़े
Once again, एक और चीज सबको बोलना चाहता हूँ. The show has been brought not just by the artists but also the crew. So thank you so much for the Amazon team right over there, the creators and the producers right over there. Name अगर आपको देखना है तो first episode के credit में देख लीजिएगा. Thank you.